सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर मनप्रीत कौर है। मैं आज ਅਸੀਂ क्लास 10 ਦਾ चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ांगे। कार्बन is found practically everywhere in the surroundings. It is present in the food we eat, the clothes we wear, the fuel in the cars, and the tissues in all living beings. These are all made up of carbon compounds. Carbon is the element which is of immense significance to us in the combined as well as in free state. In free state, carbon occurs as a diamond, graphite, fluorine and coal. In the combined state, carbon occurs in the form of a gas. For example, carbon dioxide and carbon monoxide. In the liquid state, petroleum and vegetable oil, and in the solid state, limestone. One question है कि why carbon formed so many compounds? To understand this, we need to know the bond formation in carbon. Carbon. The symbol of carbon is C. Atomic number of carbon is 6 and the electronic configuration of carbon is 2, 4. In the outermost shell, there are 4 electrons. To understand the bond formation in carbon, we need to know the combining capacity of carbon. उन्हें combining capacity की है. The combining capacity of any element depends upon the number of the valence shell electrons. In carbon, there are 4 valence shell electrons. To attain inert gas configuration, carbon either gain 4 electrons or lose 4 electrons. First case ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, suppose carbon gain 4 electrons. ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗੇਨ ਕੀਤੇ और ਚਾਰਜ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ anion C4 negative. But it shall be very difficult for the carbon nucleus with 6 protons hold 10 electrons. Second case, suppose carbon lose 4 electrons. अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कीते, चार्ज क्या है कार्बन के ऊपर C4 पॉजिटिव, मतलब की बन गए कैटायंस. अगेन it shall be very difficult because it requires large amount of energy to remove 4 electrons. तो ना ही कार्बन कैटायन बना सकता, ना ही एनायन. कार्बन overcomes this difficulty by sharing electrons with the other carbon atoms or with the atoms of the other element and form covalent bond. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ types of covalent bond. 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ types ਹੁੰਦੇ ਹਨ: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ single covalent bond. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ. Atomic number of hydrogen is 1 and the electronic configuration of hydrogen is 1. To attain inert gas configuration, hydrogen requires 1 more electron. The 2 hydrogen atoms combine and share 1 pair of electrons and form single covalent bond. Second is double covalent bond. We take an example of oxygen molecule. For oxygen, atomic number is 8 and the electronic configuration of oxygen is 2, 6. To attain inert gas configuration, oxygen requires 2 more electrons. The 2 oxygen atoms combine and share 2 pairs of electrons and form double covalent bond. Third is triple covalent bond. Example, nitrogen molecule. Atomic number of nitrogen is 7 and the electronic configuration of nitrogen is 2, 5.
To attain inert gas configuration, nitrogen requires 3 more electrons. The two nitrogen atoms combine and share 3 pairs of electrons and form triple covalent bond. Next topic is versatile nature of carbon. Carbon forms large number of organic compounds. कार्बन ਦੀਆਂ कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज ने ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਪਾਉਂड्स ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4। कार्बन has 4 valence electrons, therefore the valency of carbon is 4. It is capable of forming 4 bonds with the atoms of the carbon or with the atoms of the other elements. The simplest example is methane. Next property is catenation. The linking of identical atoms together form long chains is called catenation. Carbon has maximum tendency of catenation. A large number of carbon atoms link with each other to form long chains. These chains may be straight, branched or closed chains. For example, N-butane, 2-methylbutane and cyclobutane. Third property is formation of multiple bonds. कार्बन एटम है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स. द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फॉर्म्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन. द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फॉर्म्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड unsaturated compounds. For example, ethene, ethyne. Now next topic is hydrocarbons. नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन. The organic compounds which are made up of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. These are the simple examples of hydrocarbons. The simplest example of hydrocarbon is methane. Now the classification of hydrocarbons. On the basis of structure and properties, hydrocarbons are classified into 2 groups: open chain hydrocarbons and closed chain hydrocarbons. पहला ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे open chain hydrocarbons. Open chain hydrocarbons contain carbon-carbon straight chains. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. Okay, the open chain hydrocarbons further subdivided into 2 types: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. पहला डिस्कस करांगे saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are straight chain compounds containing only single covalent bonds. These are also known as alkanes, and the general formula of alkane is CnH2n plus 2, where the N stands for the number of carbon atoms. Second type is unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are also straight chain compounds having double or triple bond between the carbon atoms. These are further subdivided into alkenes and alkynes. In alkenes, the 2 carbon atoms in the chain are connected by a double bond. The general formula of alkene is CnH2n. Example, ethene. The second type of unsaturated hydrocarbon is alkynes. In alkyne, the 2 carbon atoms in a chain are connected by triple covalent bond. General formula of alkyne is CnH2n minus 2. Example, ethyne. Now the second is closed chain hydrocarbons. These hydrocarbons contain closed chains or rings of carbon atom in
in their molecules. They are further subdivided into two types. The first is aliphatic cyclic hydrocarbons and the second is aromatic hydrocarbon. पहला से डिस्कस करांगे aliphatic hydrocarbons. These hydrocarbons contain a ring of 3 or more carbon atoms and have similar properties to that of aliphatic compounds. They are called aliphatic cyclic hydrocarbons. Example, cyclobutane. The second type is aromatic hydrocarbons are cyclic hydrocarbons which contain one or more 6-membered ring of carbon atoms with alternate single and double bond. The simplest example of aromatic hydrocarbon is benzene. The next topic is functional groups. कार्बन है सिर्फ हाइड्रोजन एटम नाल बॉन्ड नहीं बनाता, होर एलिमेंट्स दे नाल भी बॉन्ड बनाता है, जिवें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस. हैलोजेंस दे विच आ जांदे ने फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, one or more hydrogen are replaced by these elements. These heteroatoms are also present in some groups, and these groups confer characteristic properties to the compound regardless of the length and nature of the compound, and they are called functional groups. Some important functional groups are. The next topic is homologous series. In carbon compounds with similar functional groups, we arrange them in the ascending order of their molecular weight. The difference between any two successive members of the series will found to be CH2 group, and these series are known as homologous series. Important homologous series are alkanes, alkenes, alkynes, aldehydes, alcohols, ketones, etc. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ. Consider the family of alcohol. The functional group of alcohol is OH. ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? methanol, ethanol and propanol. The formula of methanol is CH3OH, ethanol CH3 CH2 OH and the propanol is CH3 CH2 CH2 OH. Methanol and ethanol इन दोनों से डिफरेंस की है CH2. Ethanol and propanol से डिफरेंस की है CH2. दो कोई भी सक्सेसिव मैंबर्स आ सिमिलर फंक्शन ग्रुप लिया सी OH, दो मैंबर्स ਜਿਹੜੇ सक्सेसिव ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ CH2 तो सीरीज ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ homologous series. Next topic is nomenclature of organic compounds. Nomenclature. The term nomenclature means the system of naming of organic compounds. A systematic method of naming the organic compounds was adopted by International Union of Pure and Applied Chemists, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ IUPAC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ nomenclature ਕਰਾਂਗੇ. The IUPAC name of organic compound normally consists of 4 parts: prefix, word root, primary suffix and secondary suffix. तो ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ word root. इसनू root name भी कहते हैं. It indicates the number of carbon atoms in the longest selected chain. For example, for the 1 carbon atom, the word root is meth. For 2, eth. 3, prop. 4, but. For 5, pent. For 6 carbon atoms, hex. 7, hept. For 8 carbon atoms, oct. 9, non. And 10, dec. Second is suffix. Suffix means phrase after. Suffix ਨੂੰ ਅਸੀਂ word root ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. Suffix ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix ਦੱਸਦਾ ਹੈ
कि कार्बन कार्बन एटम दे विच किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। अगर तो सिंगल बॉन्ड है उसमें से बोलते हैं अल्केन, तो प्राइमरी सफिक्स की आएगा एन, ANE। डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम दे विच, तो प्राइमरी सफिक्स आएगा इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसमें से एग्जांपल्स ना समझांगे। पहला ਅਸੀਂ एग्जांपल आवांगे अल्कीन दी। इस मॉलिक्यूल दे विच दो कार्बन एटम्स ने। अगर दो कार्बन एटम्स ने, वर्ड रूट की होएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड्स ने, प्राइमरी सफिक्स आएगा एन। द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इथेन, इथेन। सेकंड ਅਸੀਂ एग्जांपल लेने आ अल्कीन दी। अल्कीन दे विच कार्बन कार्बन एटम दे विच डबल बॉन्ड होएगा। कार्बन एटम्स ने उन्हें की है डबल बॉन्ड है। अगर दो कार्बन एटम है तो वर्ड रूट की आएगा इथ, और डबल बॉन्ड है प्राइमरी सफिक्स की आएगा इन। तो नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इथीन, इथीन। अल्काइन, अल्काइन दे विच कार्बन कार्बन दे विच ट्रिपल बॉन्ड होएगा। इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन कार्बन एटम्स ने। अगर तीन कार्बन एटम्स ने, वर्ड रूट की होएगा ਇਹਦਾ prop, एक ट्रिपल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स की आएगा आइन। द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपाइन। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सफिक्स आएगा OL, ओल। अगर कीटोन है तो ओन आएगा। और जो प्राइमरी सफिक्स तो बाद ही सेकेंडरी सफिक्स में से लगावांगे। द टेबल शोज द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। फर्स्ट ਅਸੀਂ एग्जांपल लवांगे अल्कोहल दी। इस दे विच दो कार्बन एटम्स ने। अगर दो कार्बन एटम्स ने, वर्ड रूट की आएगा इथ। सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन। एक फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्कोहल दा OH, सेकेंडरी सफिक्स आएगा ओल। जो प्राइमरी सफिक्स दा एन है, इसकी ई है, वो कितना रिप्लेस आ जाएगी OL देना। द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल ਅਸੀਂ एल्डिहाइड दे लेने हैं। इस एग्जांपल दे विच तीन कार्बन एटम्स ने। अगर तीन कार्बन एटम्स आ गया तो फिर वर्ड रूट की आएगा prop। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन। फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट है, मींस एल्डिहाइड। सेकेंडरी सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड इज AL। द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपेनल। नेक्स्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ कीटोन। इस एग्जांपल दे विच भी तीन कार्बन एटम्स है। अगर तीन कार्बन एटम्स आ, वर्ड रूट की होएगा prop। सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स आएगा एन। फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी सफिक्स की आएगा ओन। एन दी ई रिप्लेस हो जाएगी ओन देना। द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपेनोन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एग्जांपल लवांगे कार्बोक्सिलिक एसिड दी। इस एग्जांपल तीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट आ। द वर्ड रूट इज prop। सिंगल बॉन्ड है एन। फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है COOH। द सेकेंडरी सफिक्स ਇਹਦਾ ਕੀ है ओइक एसिड। द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपेनोइक एसिड। Next is prefix. Prefix means phrase before. Prefix ਨੂੰ ਅਸੀਂ word root ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। Some examples of prefixes are chloro, bromo, nitro, methyl, ethyl and propyl. Nomenclature ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ example ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ example ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ longest carbon chain select ਕਰਨੀ ਹੈ। सिलेक्ट करने तो बाद असी देखना है किहड़े-किहड़े सबस्टिट्यूएंट है। हुण इस दे विच थर्ड कार्बन आइटम ते सबस्टिट्यूएंट लगा है मिथाइल। एक
फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन ते CHO एल्डिहाइड, 4 कार्बन एटम्स चेंज है गया, वर्ड रूट इज ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स है, प्राइमरी सफिक्स एन, एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा AL, फर्स्ट कार्बन ते लगा है, थर्ड कार्बन ते लगा है मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स, सब तो पहला से की लिखांगे मिथाइल, थर्ड कार्बन ते 3 मिथाइल, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स एन, फर्स्ट कार्बन ते लगा है एल्डिहाइड, क्या आएगा 1 अल, द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। थैंक यू।